क्वेश्चन आवर क्या? जब सदन शुरू होते हैं तो हम हमारे स्पीकर साहब को हम पीठ पे देखना चाहते हैं। पीठासीन स्पीकर हो, ओके। ये हमारा मांग है। ठीक है। क्योंकि सर रोजाना सर सारे सदन ये स्पीकर साहब से मुरीद है। हमें सारे सदन की हर मेंबर स्पीकर साहब से मुरीद है। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। सर स्पीकर साहब को बुलाइए और पीठासीन कीजिए, जो भी है हमारे आपस में जो भी है मसला। क्वेश्चन नंबर 201। सर स्पीकर हमारे बात, सर स्पीकर हमारा आपका संदेश, स्पीकर हमारा कस्टोडियन है। आपका संदेश, अपना बात तो स्पीकर के सामने रखेंगे, तो अच्छा लगे आपका संदेश ठीक प्रकार से पहुंचे। Sir, a statement is laid on the table of the House. श्रीमती भावना, हाँ जी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सभापति जी, मैं जी पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये जो स्वनिधि योजना है उसे 2024 तक उन्होंने बढ़ाया। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। अध्यक्ष जी, जैसे कि हम जानते हैं कि वेंडर्स जो है वो करीबन भारत में 50 से 60 लाख के दरमियान है और 2014 में ये वेंडर्स एक्ट हमारा पारित हुआ था और उस माध्यम से करीबन बहुत सारे लोगों को उसका फायदा भी वेंडर्स को मिला है। अध्यक्ष जी, जब कोरोना का टाइम था तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत पहल की और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो छोटे छोटे अपने कामकाज रास्ते पे करते हैं, उनको दिलासा देने के लिए उन्होंने पहल करके उन्हें बहुत अच्छी मदद की थी। सभापति जी, मैं ये बात यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि जो हमारे टाउन कमिटीज है, जैसे महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, बहुत सारे राज्यों में बनी है, बट कुछ राज्यों में अभी तक ये कमिटीज बहुत अच्छे तरीके से कार्यान्वित नहीं हुई है और वो बनी भी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये कमेटी नहीं बनी है। और सर दूसरा ये मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो महिलाएं इसमें वेंडर्स है वो महिलाओं के परिवार में कोई नहीं रहने के बाद उन्हें अपना गुजारा करने के लिए ऐसे पटरी पे, रोड पे बैठकर काम करना पड़ता है और ये महिला बहुत कष्ट करती है, बहुत त्याग करती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन ऐसे महिलाओं के लिए हमारे पास में क्या पैकेज है? जबकि महिला का यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि महिलाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए। संक्षेप में पूछिए। यहाँ पर मंत्री जी को पूछना चाहूंगी, क्या हम महिलाओं को बहुत सक्षम बनाने के लिए क्या पहल कर रहे हैं? कोई पैकेज यहाँ पर हम महिलाओं को वेंडर्स के रूप में देने जा रहे हैं क्या? जी माननीय मंत्री जी। Sir, I am eternally grateful to the honourable member for having raised this scheme. Sir, I can say with full confidence that the honourable Prime Minister's urban schemes, जो भी उनकी ये योजनाएं हैं, उनमें से the Swanidhi scheme stands out. Why do I say this, sir? As the honourable member says, sir, in 2014, a Street Vendors Act was promulgated. But it is one thing to bring legislation and it is quite another to have it implemented so that the street vendors actually receive benefits. And during the pandemic, sir, in 2020, when there was an economic lockdown, at that stage it will be recalled that the street vendors, जो रेडी पटरी चलाते हैं, because the streets were closed and they ply their trade on the streets, they were particularly disadvantaged, sir. So this scheme was rolled out in the month of June 2020 और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने में कि एक महीने के अंदर जून 2020 में स्कीम की शुरुआत हुई और जुलाई में पहले लोन्स मिलने शुरू हो गए. Sir, when we devised the scheme, we thought that the total of 42 lakh of our street vendors would benefit. That was the target. But sir, the honourable member said कि शायद 40 या 50 लाख ऐसे रेडी पटरी वाले हों. मैं मैडम को यह भी बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स के एसोसिएशन के कार्यकर्ता हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उन्होंने हमसे यह भी कहा कि शायद 40-50 लाख नहीं, हो सकता है कि 2 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हों. तो स्ट्रीट वेंडर स्कीम से we have several objectives, sir. One is to provide
a system of micro finance inclusion, because ये हमारे वो बहन भाई हैं जो रोज जाके लोन्स लेते हैं, बड़े हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स लेते हैं, और जो हर 2-3 दिन के बाद जो लोन लेते हैं और हाई इंटरेस्ट पे उनको लौटाना पड़ता है. So the scheme as envisaged, sir, today I can say out of 42 lakh which was the original target, about 38 lakhs street vendors have already benefited from the scheme. And I'm very happy to inform you that whilst the target is 42 lakhs and we are moving quickly in that direction, for our internal purposes, we've already started talking about not 42 lakhs as the objective and target, but 50 lakhs also. और मुझे ये ऑनरेबल मेंबर को बताते बहुत ही खुशी हुई है, इसमें से 41%, 41% ऑफ द लोन्स हैव बीन गिवन टू आवर सिस्टर्स, महिलाएं जिन्होंने ये लोन लिए हैं. सर, ये लोन की जो कंसेप्चुअल डिजाइन है, इसमें ऐसा है सर, पहला लोन 10,000 रुपए का, अगर जिसने लोन लिया वो 10,000 रुपए को लौटा देंगे तो इंटरेस्ट फ्री एकदम अगला लोन 20,000 का मिल जाएगा, और जो 20,000 का लौटा देंगे तो 50,000 का मिल जाएगा. और उससे क्या होता है कि फ्रॉम बीइंग स्ट्रीट वेंडर्स हु आर बोरोइंग मनी एट वेरी हाई रेट्स, they have also become micro entrepreneurs, and the benefits of all the other प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो भी उनको मिल रही हैं. इसके कारण सर, अगर आप थोड़ी सी मुझे इंडल्ज करें तो मैं कुछ और भी आपके सामने रखना पाऊंगा. सर, ऐसा है कि ये स्कीम जो है, मैं समझता हूं अगर महामारी नहीं हुई होती तो शायद वो हम स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पे ही रह जाते, पर जब हमने देखा कि ये मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस थी हमारी सोसाइटी के, तो जो हमने एक ट्रिपल एस किया है, ट्रिपल एस स्कीम बनाई है, स्वनिधि से समृद्धि, और इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बाकी योजनाएं हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी एप्लीकेशंस हैं 21,36,057, and we have already given benefits to 20,56,763. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें number of applications received was 15,50,000. Already the benefit is given to 14,89,000. Pradhan Jan Dhan Yojana, applications received 3,65,000, and number of benefits sanctioned 3,54,000. So like this, all the other schemes, our brothers and sisters who are part of the PM Swanidhi scheme, they've all become beneficiaries of that. I will just name them: One Nation, One Ration Card, PM Shram Yogi Mandan Yojana, registered under BOCW, Janani Suraksha Yojana, PM Matru Vandana Yojana. Sir, in overall terms, one can say that from being vulnerable members of the society, they have now joined the mainstream. Their data has been onboarded, and they have become beneficiaries of the other scheme. Along with, sir, I might say, जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका मालिकाना हक is the name of the lady of the house. बाकी भी चीज का है. Sir, I thank you very much. I would have liked to continue to share things. I want to thank the honourable member Question is for already asking replied, this I question. think. Thank you, sir. Question is replied. Supplementary, second supplementary. सभापति जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं को विशेष पैकेज इसमें हम देने जा रहे हैं, और जो एक्ट बना है उस माध्यम से उनको जो फायदे होने चाहिए, जैसा हेल्थ के बेनिफिट्स है, बच्चों का पढ़ाई है, तो इसको क्या हम इंक्लूड करने जा रहे हैं? और महाराष्ट्र में जैसा 4,14,032 ये जो लोगों को फायदा मिला है, तो ऐसे जो स्टेट है उसमें और बढ़ाने का और उनको सपोर्ट करने का, और हमारे पास में क्या प्लान है? We regularly monitor the number of vending zones which are there in each state. And I want to thank the honourable member. Some states, as she mentioned, Maharashtra has 1,509 vending zones. But some states, like Andaman and Nicobar Islands, maybe because vending zones and the scheme, you need mostly in B-class town. जो बहुत छोटे शहर होते हैं, वहाँ पे I get the feeling that the same pressure is not there, but we are monitoring this. We have a total of 13,403 zones. Some states like West Bengal don't have any vending zones. Now that I find very surprising. The state of West Bengal does not have any vending zone.
In also some other states would also have very few. So we are monitoring this, and we are going to try and incentivize them to ensure that more and more states derive the benefits, which I think is one of the most unique schemes worldwide, and it is being hailed worldwide because the Honorable Prime Minister showed very high degree of sensitivity to the most vulnerable sections in our society, and it has been widely welcomed, including by the beneficiaries of the scheme. And we have been repeatedly, they have expressed themselves on record to be able to take benefit of this. श्री कृपाल बालाजी तुम्हाने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि ये जो गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम इस देश में चलाई जा रही है। सर, जो जवाब हमें मिला है उस पर से तो हम बिल्कुल खुश हैं। इतने अच्छी तरह से ये गरीबों के लिए स्कीम हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है और लगभग 68 लाख लोगों ने उसका पंजीयन भी करा चुके हैं। लेकिन इसमें मैंने जो देखा कि बैंक का ऋण देने का जो मसला आता है तो वहां पर नेशनलाइज बैंक उसको लोन दे रही है। लगभग 95% लोन नेशनलाइज बैंक दे रही है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक एंड अदर बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसमें लोन नहीं दे रही है। तो उसके बारे में भी कोऑपरेटिव बैंक को कुछ डायरेक्शन देने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और ये स्ट्रीट वेंडर होने के कारण ये स्ट्रीट पे फूड भी बेचते हैं, वेजिटेबल्स भी बेचते हैं, बहुत सारे प्रकार के साधन जो लोगों के डेली यूज के लिए होती है। संक्षेप में तो इस मसले पर मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उनका हेल्थ का ध्यान हम रखेंगे तो हमारा भी हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में इनके लिए कोई ESIC का लागू कर रहे हैं या और कोई शासन की योजना है जिससे इनको हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी? But I want to thank the honourable member who has raised three very valuable points. One is the loans which are being drawn and why the public sector banks are actually in the forefront and the cooperative banks slightly less and the private sector banks, he said, even less. So that is a fact. I have the figures with me for the state of Maharashtra. In Maharashtra, the PSB public sector banks, all India, the figure is 5,936 loans amount in crores dispersed. In Maharashtra, it's 582 crores. Number of beneficiary overall is 34 lakh beneficiaries, 34 lakh 94,000. In Maharashtra, it's 4 lakhs. Similarly, I have for private banks, SBS Small Finance Bank, the non-NBFCs. Sir, what the honourable member is saying is correct. The private sector banks are so far disbursing only a very small percent, and my calculation says it's only about 2%. But the public sector banks have come forward and they have been, we are monitoring the situation, sir, and I am confident that with the steps underway and the cooperation of other central government agencies like the Department of Financial Services, we are proceeding. So both the number of beneficiaries and the loans disbursed will all be increased. I also want to mention to the honourable member, sir, that street food has also acquired a new salience. In fact, they have tied up with Zomato and other entities, and now quality street food can be ordered in our homes through digital technology. And what is very reassuring is that the street vendors themselves have taken to digital technology both for the application of loans, for their repayment, for other transactions, and so it is also adding to the overall thing thanks to the technology push given by the Honourable Prime Minister. Insofar as sanitary and health conditions are concerned, I want to assure the honourable member that the concerned agencies, both at the local, urban, local bodies level, and are giving full attention to this. And in fact, that the highest qualities of health are being observed in these outlets. And ultimately, this is a responsibility of the local bodies, but from the central government, etc., whatever assistance we give is being provided. Thank you very much, sir. Question number 202. The Honourable Minister.
जी सप्लीमेंट्री, थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ से भी ज्यादा है। इन सभी को अपनी पेयजल आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, सिंचाई हेतु कृषि संबंधी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए और उद्योगों के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता है। भारत आज भी वर्षों के बहुत हद तक मानसून पर निर्भर करता है। बारिश अच्छी हो तो पानी की उपलब्धता हमारे जल भंडारण में बढ़ जाती है, अन्यथा जल भंडारण गृहों में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होने से उससे हमारी कृषि, हमारा उद्योग, हमारा सामान्य जनजीवन और विद्युत का उत्पादन सभी पर प्रभावित होते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने बलिराजा संजीवनी के परियोजना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र बुल्ढाना में 2016-17 में जी गांव बांध परियोजना को स्वीकृति प्रदान की थी, किंतु पिछले 2 वर्ष कोविड की वजह से परियोजना की लागत बढ़ गई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि केंद्र सरकार बढ़ी हुई अनुमानित लागत को वहन करने सभी से आग्रह है, कृपया अपनी सीट पर जाइए। शीघ्र क्वेश्चन आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई निधि आप सरकार से सवाल पूछिए, आप सरकार से जानकारी लीजिए, सरकार को की आलोचना कीजिए, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज। क्वेश्चन आवर चलना चाहिए, चलने देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था वो देश के बांधों में वर्तमान पानी की जो स्थिति है उसको लेकर के था। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो पर्टिकुलर महाराष्ट्र के एक प्रोजेक्ट को लेकर के है, और वो भी उस प्रोजेक्ट जो भारत सरकार ने स्वीकृत किया उसकी लागत बढ़ जाने के कारण से जो विषय सामने आया उसको लेकर के है। मुझे लगता है मूल प्रश्न से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए उन्होंने जानकारी भी नहीं, उन्होंने सुझाव दिया है, लेकिन उनके विषय में मैं व्यक्तिगत रूप से उनको मिल करके उनसे आग्रह करूंगा कि वो आएंगे, हम विषय पर बैठ करके चर्चा करें। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Honorable members, I take the opportunity to wish birthday greetings to Honorable Member of Parliament, Dr. Anil Sukhdev Rao Monde. He is a member of Rajya Sabha since July 2022, an MD in medicine from Nagpur University. He is doctor by profession and an agriculturist by passion. Dr. Bonde has been a member of Maharashtra Legislative Assembly for 2 terms and has served as Agriculture Minister in State Government of Maharashtra. He is married to Dr. Vasudha Bonde, and the couple is blessed with son Kunal and daughter Manali. On my and your behalf, I wish him a long, healthy and happy life and extend our greetings to his family and friends. Papers to be laid on the table, Dr. Jitendra Singh. आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवाही में अपने नाम के आगे संख्या 2-1 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2/B in today's list of business pertaining to the Ministry of Culture. Thank you.
श्री अश्विनी कुमार चौबे, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती मीनाक्षी लेखी। Sir, Chairman Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 2D in today's revised list of business. श्री रामेश्वर तेली। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2E पर वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। डॉक्टर एल मुरुगन। Respected Chairman Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2F of today's revised list of business in the Department of Information and Broadcasting. श्री निशित प्रमाणिक। महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्य संचालन की संशोधित सूची की क्रमांक नंबर 7 की मेरे नाम के आगे दर्शाए गए दस्तावेज को सभा पटल पर रखता हूं। रिपोर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्री, श्री तिरुचि शिवा, श्री राजीव शुक्ला। Yes, thank you, Chairman. With your permission, I rise to lay the table of 322nd report on action taken by the government of the recommendations, observations as contained in the report of the Committee on Demands for Grants pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. So, 323rd report on action taken by the government on the recommendations, observations as contained in the report of the Committee on Demands for Grants pertaining to the Ministry of Heavy Industries. Report of the department related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, श्री सुशील कुमार मोदी। महोदय, मैं भारत सरकार के भर्ती संगठनों के कार्यक्रम की समीक्षा विषय के संबंध में विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 131वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूं। Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, श्री सतीश चंद्र दुबे। मैं आज कार्य सूची में मेरा नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधित अस्थायी समिति का 27वां, 28वां, 29वां और 30वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूं। Report of the department related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs, Dr. K. Lakshman. Sir, I rise to lay the 19th report, Hindi and English versions, 17th Lok Sabha, on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 18th report of the department related Standing Committee on Housing and Urban 2022-23 on demands for grants 2023-24 of the Ministry of Housing and Urban Affairs listed against my name in today's list of business. Thank you. Statement of the department related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs, Dr. K. Lakshman. Sir, I rise to lay the action taken statement, Hindi and English versions, on action taken by the government on recommendations, observations contained in Chapter 1 of the 16th report, 17th Lok Sabha of the department relating Standing Committee on Housing and Urban Affairs, on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 13th report, 17th Lok Sabha of the committee on the subject, implementation of metro rail projects, and appraisal listed against my name in today's list of business. Report of the department related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment,
श्रीमती गीता एलियास चंद्र प्रभा। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 3F पर यथा सूचीबद्ध सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधित स्थायी समिति के 91वां प्रतिवेदन हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण सभापटल पर रखती हूँ। Statement of the Department related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Shri Prakash Javadekar. Sir, I wish to lay on the table of a copy in English and Hindi of the statement showing action taken by the government on the observations and recommendations contained in the 11th report of the Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, on action taken by the government on observation and recommendations contained in 8th report on demand for grants of the Ministry of External Affairs for the year 21-22 as listed against my name at serial number 3G in today's list of business. Statement by Minister Dr. Jitendra Singh. And sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding A. Status of implementation of recommendations / observations contained in the 355th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest, Climate Change on the action taken by the government on the observations / recommendations of the committee contained in the 345th report on demands and grants 2021-22 pertaining to the Department of Space. B. The status of implementation of recommendations / observations contained in the 370th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest, Climate Change on the action taken by the government on the recommendations / observations of the committee contained in the 362 report of the demands for grants 2022-23 department pertaining to the Department of Space. Thank you, Chairman, sir. Shri Arjun Ram Meghwal to move a motion for election of 2 members to the Joint Committee on Offices of Profit. Honorable Chairman, sir, with your permission, I move the following motion. That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do elect 2 members of the Rajya Sabha to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancy caused due to the passing away of Sri Haridwar Dubey on 26th June 2023 and the vacancy which will arise due to retirement of Ms. Dola Sen from the membership of Rajya Sabha with effect from 18th August 2023 and resolves that the House do proceed to elect in manner as directed by the chairman 2 members from amongst the members of the House to the said joint committee to fill the vacancies. Thank you, sir. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Honorable members, I have received 39 notices under Rule 267. Honorable members, 37 of the honorable members have focused on issues related to Manipur. One honorable member seeks discussion on situation in Manipur and Haryana, and the other one seeks discussion on demand for discussion on reservation for women in legislative bodies. Honorable members, I have also received notice from Sri P. Wilson, but as a matter of fact, that was given by him while the House was in session yesterday. And 267 can be entertained only after the House is adjourned until 10 a.m. the next day. Honorable members, I would only reiterate
my stance that on account of the procedural mechanism indicated by me, I am unable to persuade myself to agree to these notices. Yes. Sir, thank you. Sir, we fully understand what you have said, sir, that the procedural matter means that 267, our emergency notices which have given, you're looking at some other sections of the rules. Sir, without getting into the procedural and into the nitty-gritty, even though we do believe, sir, 267 supersedes all other rules. That's the in-day. So all the 267 notices you've received today supersedes any other 176 notice. But that's not the issue, sir. The issue is the people of this country want to hear us on Manipur. We as an opposition, all of us, including our respected leader, sir, we want this discussion on Manipur. We are not here to show ego or arrogance. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. Listen to him. Sir, 1 minute. Listen to him. Sir, I will appeal through you to the leader of the House. I will appeal through you to the leader of the House. Manipur, sir, needs care, needs healing, needs to listen to the voice of consolation. Your point. I will appeal to you, to the leader of the House. Let us find a solution. Let us find a solution, because this logjam is helping nobody. We will suggest through you, sir, Manipur has to be discussed for 6 hours, for 8 hours. Let us discuss it in a spirit of one nation. This is not one state, sir. We are very serious about this. Honorable member, please take your seat. Our leader of the opposition, Mr. Derek, sir, this is what you made your say. point. You made a point. So we come to you, sir, with this spirit. Please. And I appeal through you, sir, to the leader of the House. There is a very simple way. No more. Nothing will go on record now. Very simple. No, nothing will go on record now. Please take your seat. Honorable members. No, before that. Honorable members. One second. One second. No. Honorable members. The honorable member has raised a very valid point. And as a matter of fact, it is very wholesome. It is a reminder to all of us that we must get into way forward stance, because discussion on Manipur is imperative, and in the heart of hearts, everyone wants it. Let me remind you, at the very first instance, I conceded to the notice under Rule 176, and the government very promptly agreed for a discussion. I had fixed, in consultation with the leader of Council of States, date and time. Supplementary list of business was drawn. I had indicated from this chair that 2.5 hour short duration discussion time limit will not apply. I had indicated to everyone that I will allocate as much time as all segments of the House need to avail for making an input. That opportunity did not fructify. I do not wish to engage into blame game. We in this House have to set an example even for every theatre of legislature in the country. So, in a sense, I am happy that an honorable member of this House has focused on a very substantive aspect, that we need to discuss, debate, engage into dialogue on Manipur. I take note of various hands that are being raised. Friends, honorable members, this is not an occasion to replicate an input. The core issue is known. Let me get input from leader of the House. Please. Honorable Chairman, sir, Manipur has always been a very sensitive issue for all sections of this House. The government has been very proactive in its actions, and right from the day one, we have been requesting, the chair requesting all the honorable members through you, sir, that we must have a wholesome debate on this subject. We must send out a message
appealing for peace. We must, all of us collectively, work towards peace and stability and bring back that healing touch to Manipur. Government has taken every initiative possible on every occasion to appeal to all sections of the House to discuss this issue. I am indeed grateful to my fellow Member of Parliament and senior leader of the All India Trinamool Congress for showing this readiness to have a debate in this House. Also, we believe that we must run the House in a proper, orderly manner. Ultimately, we cannot have a situation where we have a discussion, but yet we continue to disturb the House. We cannot have a situation where, when the Honorable Home Minister rises to give his response to this very sensitive issue and lay down the context and the actions that were taken. I think if we are all agreeable that there should be a discussion on Manipur, the government will be very happy. I will take the convenience of the Honorable Home Minister when he'll be able to present, to discuss in the House. We only have, as the business is listed, we'll have to see when that date can be slotted in. But I can assure you, sir, that this government from day one has been keen for a debate on Manipur. We stand with the people of Manipur. We believe that a good debate is in the interests of all sections of society and the country. I will request my senior colleagues from different parties to join me for a cup of tea and we'll have a discussion and we'll sit and work out how the House will work, how we can make sure the House runs in an orderly fashion. There are very important bills before the House. Today we have 3 bills listed, each one of which is important, and we would like to ensure the participation of all members. And sir, now that it's Thursday already, tomorrow is Private Members' Day. Friday, Monday we'll have the business that is being passed in the Lok Sabha today coming before the House. If we can have a healthy discussion, if we can debate, have a dialogue, and may the best course of action prevail. If we can continue to work in an orderly fashion in the next few days, I think that will give a very good message to the country, and the past can be behind us. Let's look to the future with positivity. Honorable members, there is always going to be different point of view. One side may think all is being done, the other may think much is required to be done. In this House, to exemplify our maturity and statesman approach, let us lend our ears to the other point of view also. Maybe the other point of view receives real consideration. Often it is seen it may be the right one. On this issue, I would not like to get further input. I will invite floor leaders in my chamber at 1 p.m. today, and the chair will accommodate a discussion on Manipur issues irrespective of time constraint and irrespective of other constraints. I now take up the next business. Sir, leaders. Not on that issue, sir. Sir, I'm on a point of order, sir. Please. What is Not your... on that issue, sir. Okay. I'm on a different point. Okay. So on the first What of is your point of order, sir? I shall, sir. 258, sir. Huh? Yeah. What is the point of order? So on the 1st of August, you rejected all the 267 notices, saying that they do not confirm on the 1st of August. No, sir. Earlier also. Sir, you repeated again, sir, on that day also, that the notices do not fall under are not in conformity with the rules and your observations. You earlier referred to that, sir, and after that I very meticulously drafted my notice, sir. So I have asked for a clarification in what respect our notices do not fall under the observations of you, sir, so that our future notices will be in a proper form, so that this technical factor need not stand in the way of a very important issue. It's a very important factor. Sir, you are a very senior member, and any communication to the chair
from any honorable member is read by me very carefully. It is analyzed. I have read your communication. One second. I have read your communication. It is very well worded. We have discussed it personally also on 2 occasions. And we have discussed it at 1 occasion at Uprashtrapati Niwas also. I would urge you, sir, to go through my ruling. I have indicated with clarity from my perspective that these are the conditions which a notice under Rule 167 must satisfy before it is considered at my end. And one of the conditions is that the honorable member must spell out with clarity that under the rules there is no other mechanism where under the issue can be raised. Now coming to Manipur, on the same day, from the same honorable member, I have a notice under 176 and a notice under 267. Now can there be greater contradiction that a member is giving notice under 267 and also 176 on the same point? In any case, without taking time of this August House, I would again interact with you and try to reason out. Otherwise, we will seek assistance of legal luminaries who are present in the House and get a way out. If something is required to be revisited at my end, I will always do that. I have done it on 2 occasions earlier. 1 second. No, you take your seat, sir. Sir, on the ecosystem that fortunately has evolved, we would want your guidance on that. One second. Sir, always. Sir, I have to look at you. One is always drawn to the power center. Please. नहीं, मैं जब हमेशा मुझे आप उठाते हैं तो 2 सेकंड में फिर बिठाते हैं, तो ये बड़ा मेरे लिए बार बार ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब एक सभी मिलके वाया मीडिया एक रास्ता निकालने के लिए आपने कहा है, और दूसरे हमारे पार्टी के, इंडिया पार्टी के जितने भी Please. So, honorable members, let us not get into hair-splitting assessment of a situation. The substance I want to please go ahead, sir. नेताओं ने ये Only प्रपोजल leader दिया of the है opposition will hold the floor. और Nothing will go on record. सब मेरा Nothing other than LOP will go record. Go ahead, sir. मेरा एक ही निवेदन है कि 176 नोटिस भी उसी दिन दिए और 267 भी उसी दिन दिए। जब 267 नोटिस जो है ये सभी जितना भी बिजनेस है उसको अलग रख के 267 को प्रायोरिटी देना चाहिए। यही पहले भी प्रेसिडेंट था और आज भी वो प्रचलित है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रेस्टीज इशू क्यों बन गया। 267 में एक हमको कहने के लिए तो मौका मिलता है और आपने ये भी कहा कि उसको एडमिट करने के लिए कारण होना चाहिए, तो हमने कारण तो बताया। मैंने तो आपसे कल ही विनती की, आप जरा गुस्से में थे शायद, आपको Sir, I am a married man for more than 45 years. मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर। Trust me. नहीं साहब, कभी गुस्सा नहीं करता। मैंने चंद लोग And Mr. Chidambaram, a very distinguished senior advocate, will know. As senior advocates, we have no right to show our anger, at least to the authority. You are an authority, sir.
गुस्सा नहीं करता। इसको नहीं इसको मॉडिफाई कर दो से थोड़ा। नहीं गुस्सा नहीं करते। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। हाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। नहीं आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो। लेकिन तो सर, she is not a member of the house. We can't discuss one who is not a member of the house. Sir, in this relationship, otherwise we can discuss. Go ahead. So, sir, let us have your input, sir. देखिए, मैं नोटिस यूं ही नहीं दिया, मैंने 8 पॉइंट इसमें लिखकर डिटेल दिया क्यों 267 में ये विषय एडमिट करना, ये पूरा है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं 267 में लेने के लिए, तो ये प्रेस्टेज इश्यू बन गया। अब हम इसको रोज उठा रहे, उधर से रोज सजेशन हो रहा। नहीं, मेरा सजेशन यही है कि आप 1 बजे इसके लिए अपने चेंबर में बुला रहे हैं, तब तक आप हाउस एडजर्न करिए और हम बैठकर 1 बजे तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वो समस्या को सुलझाकर हम यहाँ पर बैठेंगे। ये मेरा विनंती है आपसे। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर्स, सर ये बड़ा छोटी सी, आप छोटा सजेशन भी नहीं मानते। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने दो बोले तो वो भी नहीं मानते, और प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिफेंड कर रहे, मुझे समझ में ही नहीं रहे। ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है। प्लीज सर। अरे ये हर बात को प्लीज सर, I got a point. अरे भाई ये डेमोक्रेसी है, प्लीज ये क्या बाउंडेड लेबर है आप? नो प्लीज, इस चीज को करने के लिए नथिंग विल गो टू प्लीज। ऑनरेबल मेंबर्स, सर आप बुला रहे। ऑनरेबल मेंबर्स, 1 second, please take your seat. Honorable member, let me respond to what the LOP has said. No. Honorable members, we must always be alive. Would you please take your seat? Then take. Nothing will go on record. Take your seat. Sorry. Don't disrupt the house. Honorable members, leader of the opposition has put out 3 things for consideration. I'll take up the last one. That concerns the Honorable Prime Minister. We must always be alive to a situation that we are a nation of more than 1.3 billion people. We are a democracy, most functional, vibrant, globally recognized. India is the only democratic nation in the world that has constitutional democracy at the village level, at Panchayat Samiti level, at Jila Parishad level, apart from state and there. If our Prime Minister is not required to be defended by me, he has come to be recognized on global platforms, Senate and Congress in the US. Imagine the kind of response. Every Indian should be proud. We must be proud of it. No, you cannot have an approach. Why are you shirking from the hard reality? India is rising as never before. The rise is unstoppable. It is on account of all of us. Everyone has contributed to it. Such a global recognition. I am not required to defend anyone. The Prime Minister, honorable members, after 3 decades of coalition governance under the leadership of the Prime Minister, you had 2014, you had 2019 electoral results. I am not required to defend anyone. If I am required to defend anyone,
I am not required to defend right. I am not required to defend left. I am required to defend Constitution. I am required to defend your rights. Therefore, such an observation coming from leader of opposition is not very wholesome. We cannot have it, you see. We must be proud of our government, proud of our citizens, proud of our developments. Where are we? Honorable members, where are we heading? Political stance, you are entitled. I am not a stakeholder in politics. Once again, I am not a stakeholder in politics. I am not concerned with politics of parties. I am concerned with governance. I am concerned with growth of the country. No. Honorable members, matters raised with permission, Dr. Sumer Singh Solanki. Dr. Sumer Singh Solanki. धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। नर्मदे हर मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान देश के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, देश भर में बोरवेल और ट्यूबवेल के खुले गड्ढों में गिरने से न जाने कितनी ही मासूम जिंदगियां की किलकारियां हमेशा काटोपत्ती गांव में बोरवेल में गिरे 2 वर्षीय बालक सुजीत को भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की हर मुमकिन कोशिशों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। पंजाब के संगरूर जिले में 150 फुट गहरे बोरवेल में गिरे 3 साल के फतेहवीर सिंह को भी नहीं बचाया जा सका। माननीय सभापति महोदय, विगत वर्ष उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में वाराणसी के पिंडारा में भी ऐसी घटनाएं घटित हुई, जिसमें 6 साल की मासूम बच्ची 13 वर्षीय अनिकेत यादव की भी मौत हो गई। हरियाणा के हल्देड़ी गांव में 2006 में 5 वर्षीय प्रिंस के 50 फुट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिरने के बाद न्यूज टीवी चैनलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दृश्य लाइव दिखाए थे, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान इस प्रकार के हादसों की ओर गया था, जिससे यह भी उम्मीद जगी थी कि भविष्य में ऐसे हादसे सामने नहीं आएंगे, परंतु आज भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में देश में जहां बोरवेल में गिरने वाले बच्चों की संख्या 48 थी, वहीं 2015 में बढ़कर 71 हो गई। तमिलनाडु के बारे में 2014 में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने गृह मंत्रालय को सूचित किया था कि इस राज्य में 2010 से 2012 के बीच 561 बच्चे बोरवेल में गिरे थे, जो कि अब यह आंकड़ा हजारों में पहुंच गया है। माननीय सभापति महोदय, 2006 में हरियाणा के प्रिंस बोरवेल में से निकालने के बाद 2015 तक 16,000 से अधिक व्यक्ति, महिलाएं और बच्चे खुले गड्ढे में गिरने से उनकी मौत हो चुकी है। तमाम बचाव कार्यों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ऐसे भयावह हादसों को देखते हुए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोरवेल के रखरखाव संबंधी निर्देश जारी किए थे। माननीय सभापति महोदय, सवाल यह भी है कि आखिरकार इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए कोई कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से अति संवेदनशील और गंभीर विषय के लिए सरकार से यह आग्रह करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़े कानूनों का प्रावधान होना चाहिए, ताकि ऐसी भयावह घटनाओं का दोहराव देश में नहीं हो। धन्यवाद। श्री जुगल सिंह लोखंडवाला। यस सर। धन्यवाद माननीय महोदय, आपने एक भारत की गौरव की बात मैं आज करने वाला हूं आपके सामने। आज भारत ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड, जो 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी, उसके अंदर 6.8 करोड़ इनकम टैक्स फाइल किए गए। ये रिकॉर्ड पिछले वर्ष के मुकाबले 17% ज्यादा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और साथ में साधुवाद करता हूं। इसके साथ इनकम टैक्स विभाग के सभी कर्मचारी, सभी टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर अकाउंटेंट और सभी टैक्स पेयर जो है, उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ में माननीय महोदय, डिजिटल इंडिया के सपने को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
जिस मेहनत के साथ आगे बढ़ाया है, उसके साकार किए इस देश के लिए एक मिसाल है। आज भारत डिजिटल गवर्नेंस क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। इसका नतीजा है कि बड़ी संख्या में ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न बिना किसी रुकावट देश के कोने कोने से भरे जा रहे हैं। मुझे लगता है इतने बड़े स्केल पर दुनिया के सिर्फ भारत ही करने में सक्षम है और सफलतापूर्वक कर सकता है। बढ़ते हुए आईटीआर ये भी बताता है कि किसी प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ रही है और जहां दुनिया बड़े देश की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही है, संकट बादल छाए हुए, वहां दूसरी ओर हम देशवासियों के मेहनत और परिश्रम का अपनी अर्थव्यवस्था को भी शक्तिशाली बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न्यू इंडिया जो हमारे पास विश्व की जो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने में सक्षम है, मैं माननीय नरेंद्र मोदी मतलब मैन ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो देश को बदलने और तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने में सक्षमता करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। श्री विजयपाल सिंह तोमर। सभापति महोदय, मैं एक गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना नदी, काली नदी, हिंडन नदी का पानी पीने लायक नहीं रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगे औद्योगिक इकाइयों, स्लाटर हाउस, चीनी मिल, पेपर मिल, केमिकल कारखानों के प्रदूषित जल से इन नदियों का पानी जहरीला हो गया है। ये अपने समीपवर्ती सैकड़ों गांवों में कैंसर की बीमारियां फैली हुई हैं। काली नदी जहां भी सैंपल लिया गया वहां ऑक्सीजन की मात्रा शून्य पाई गई। मान्यवर, जबकि डीसीओ 2,80,000 और बीओडी की मात्रा 40 पाई गई। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस नदी के पानी में पारा, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट की मात्रा बहुत अधिक है। स्पष्ट है कि काली नदी का पानी पीने लायक ही नहीं, सिंचाई या किसी अन्य काम के लायक भी नहीं है और ऑक्सीजन खत्म होने से जलीय जंतु भी गायब हो गए हैं। एनजीटी के आदेश पर काली नदी के किनारे चिकित्सा कैंप लगाए गए, जिसमें पाया गया कि नदी के समीपवर्ती गांव में कैंसर पीड़ितों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, राष्ट्रीय मानकों से काफी अधिक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी के 2500 किलोमीटर के सफर में काली नदी सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण बांट रही है। वहीं हिंडन नदी में नालों का केमिकल रासायनिक जहरीला पानी यमुना नदी में बह रहा है। यमुना नदी का जल किसी भी उपयोग लायक नहीं रहा है। इतना ही नहीं, हैंडपंप का पानी भी पीने लायक नहीं रहा है, क्योंकि स्लॉटर हाउस व अन्य औद्योगिक इकाइयां प्रदूषित पानी जमीन के अंडरग्राउंड वाटर में डाल रही हैं। इसके कारण अंडरग्राउंड वाटर भी प्रदूषित हो गया है। मानवर, पानी की 2 लेयर पीने लायक नहीं है। औद्योगिक इकाइयों के ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमता के अनुसार नहीं चलते हैं। प्रदूषित पानी के कारण कैंसर, पीलिया, पेचिस, यकृत, अतिसार, हैजा, क्षय रोग, खुजली, नेत्र रोग आदि बीमारियां फैली हुई हैं, जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। असामयिक मौत हो रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जन स्वास्थ्य को देखते हुए इन औद्योगिक इकाइयों से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर इस दिशा में तेजी से प्रभावी कदम उठाए जाएं और संबंधित राज्यों को भी निर्देश जारी किए जाएं। धन्यवाद। श्री पी विल्सन, नॉट प्रेजेंट। ऑनरेबल मेंबर्स, when a member seeks indulgence of this House to raise a question or a special mention, and when such a member is not present without leave of the chair, it is a very serious matter. It can never be appreciated. It is failure to perform constitutional duty for which the members are charged. Honorable members, if we look for an alibi or an excuse or an escape route after disruption not to participate in proceedings, that is injustice to the people at large. I gave the floor to the leader of opposition because a point of view was expressed by floor leader of an opposition party that we must have way forward. When somebody talks of way forward stance, I look backwards. That I gave that opportunity at the earliest occasion to discuss Manipur issue. The government categorically, spontaneously
through leader of the House, Shri Piyush Goyal, agreed for a discussion. The discussion was slated, time was fixed, supplementary list was out. I had indicated to everyone, I will allocate as much time as the members want. It is perhaps for the first time that the chair had given a direction that there will be no limitation on time. I thought, in all fairness, the leader of the opposition will have wholesome, constructive approach. He will take off his partisan specs and believe in statesman approach. Unfortunately, the leader of the opposition tried to be political. The world recognizes India today as a mighty power. We are at a stage in the world where our rise is being taken note by everyone globally. When it comes to economy, we are the 5th largest economy on the planet. When it comes to digital transfers, honorable members, in 2022, 1.5 trillion US dollars, that is the digital transfer. And this digital transfer is 4 times the digital transfer of USA, UK, France and Germany. All these are being accomplished because of visionary leadership. And at that point of time, if you do not wish to appreciate the Prime Minister, where is the occasion to go on a tangential approach and to take on the Prime Minister of the largest democracy on the planet? I do not appreciate such kind of stance. It happened when Mr. Chidambaram raised with respect to Prime Minister's visit to Bali. I have taken a serious note of that. Mr. Chidambaram wanted to take a snapshot by downsizing the stature of Indian Prime Minister. Political parties will play their politics. Let them play their politics all around. But there is an occasion for all of us, when we have taken oath under the Constitution, to rise about political stakeholding. No political interest, no economic interest can ever entitle us to compromise our nationalism, to compromise the stature of our leaders. I'm surprised the response the opposition gave when I said it was a proud moment for every Bharatiya that Mr. Narendra Modi was so received in the Senate and Congress. And look at the kind of response it was. And when the Honorable Prime Minister talked of artificial intelligence A1, AI, he said America and India. What kind of thumping was there? I would therefore urge everyone, and through you to the people outside, we will have our political approach, we will have our political ideology, we will have different point of view, we will not agree to everything the other side says. But we always have to keep the nation first. We have to believe in our nationalism. And we cannot allow people to taint, tarnish, demean, run down our constitutional institutions, the institution of the Prime Minister. I fail to understand how anyone can have that kind of political appetite as not to digest the ground reality and hard facts. I would therefore again call upon you, please reach out to your friends on the other side. If they walk out of the house, it is political optics. But they must reflect, introspect, and think. They are not walking out from the house. They are walking out from their duties. They are walking out from their constitutional obligations. They are walking out because they don't want to be partner in the growth of the country. Every question that is put can put the government on the mat. Every question can give rise to a situation where government will be enlightened for a new path, new course of action. And I've seen it.
very intelligent questions are asked. The questions and the supplementaries, many of you are here. They enlighten the government, they enlighten the minister, and ultimately they go and converge into a policy. So please, it is my plea with you, my impassioned plea with you, with folded hands. Reach out to your friends. Make it a point that at least one of you will reach out to friends on the other side. I hope you do it. Honorable members, Dr. Radha Mohan Das Agarwal. माननीय सभापति महोदय, भाषा सिर्फ शब्दों और संवाद नहीं, भावनाओं का और संस्कृति और सभ्यता का प्रतिमान होता है। मैं आज पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा नेपाल की तलाई में बोली जाने वाली एक भाषा जो दुनिया की सबसे मीठी भाषाओं में शामिल होती है, जिसे नेपाल, फिजी और मॉरिशस में राष्ट्रीय संवैधानिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जिसके बोले जाने वाले 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में आज 6 करोड़ हैं और पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोग हैं। आज मैं उस भाषा को और उस भाषाभाषी इन क्षेत्र के नागरिकों की पीड़ा को प्रतिनिधि होने के नाते आपके बीच में रख रहा हूँ। महोदय, उत्तर प्रदेश के बलिया, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, मऊ, जौनपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और आजमगढ़, बिहार के बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और भभुआ, झारखंड के पलामू और गढ़वा और इसके अलावा नेपाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा और दुनिया के 40 देश। ये एक ऐसी भाषा है जिसको बोलने का काम यहाँ के लोग करते हैं। महोदय, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में विश्व के 154 भाषाओं को अधिक स्थान दिया गया है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं, एक भोजपुरी भाषा के हिस्सेदार होने के नाते, कि भोजपुरी उनमें से एक भाषा है। महोदय, भोजपुरी एक पूर्ण भाषा है और मूलतः इसकी उत्पत्ति संस्कृति और उसके संस्कृत और उसके बाद मागधी प्रकृति से हुई है। महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि जो भाषाएं आज 8वीं शेड्यूल में शामिल हुई हैं, गुजराती के बोलने वाले 5 करोड़ 50 लाख, उर्दू के बोलने वाले 5 करोड़ 7 लाख, भोजपुरी के बोलने वाले 5 करोड़ 5 लाख, कन्नड़ के बोलने वाले 4 करोड़ 35 लाख, मलयालम के बोलने वाले 3 करोड़ 27 लाख, उड़िया के बोलने वाले 3 करोड़ 40 लाख, पंजाबी के बोलने वाले 3 करोड़ 11 लाख, राजस्थानी के बोलने वाले 2 करोड़ 58 लाख, छत्तीसगढ़ी के बोलने वाले 1 करोड़ 62 लाख, आसामी के बोलने वाले 1 करोड़ 48 लाख, मैथिली जो भोजपुरी की एक बहन भाषा है उसके बोलने वाले 1 करोड़ 33 लाख, संथाली के बोलने वाले 69 लाख 73 हज़ार, काश्मीरी के बोलने वाले 65 लाख 54 हज़ार, सिंधी के बोलने वाले 37 लाख 72 हज़ार, नेपाली के बोलने वाले 29 लाख 26 हज़ार, गोंडी के बोलने वाले 28 लाख 57 हज़ार, कोंकणी के बोलने वाले 20 लाख 47 हज़ार, डोंगरी के बोलने वाले 25 लाख 96 हज़ार, बोडो के बोलने वाले 14 लाख 48 हज़ार, मैथिली के बोलने वाले 15 लाख 58 हज़ार। और अध्यक्ष सभापति महोदय, मैंने आपको बताया इस सदन के माध्यम से कि भोजपुरी को बोलने वाले 2011 में 6 करोड़ लोग थे, 2021 में यह संख्या बहुत बड़ी हो चुकी होगी। महोदय, भाषाओं को स्थान देना एक सतत प्रक्रिया है। 1967 में सिंधी जोड़ी गई, 1992 में कोंकणी, मैथिली और नेपाली जोड़ी गई, 2004 में बोडो, डोगरी और मैथिली जोड़ी गई। मेरा आग्रह है कंक्लूड। डॉक्टर जॉन ब्रिटास नॉट प्रेजेंट, श्री प्रकाश जावड़ेकर। सर, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। रीड द स्क्रिप्ट। हाँ, प्रकाश जी, यू आर फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रोसीजर, रीड इट। नहीं, ये स्पेल आउट द स्पेशल मेंशन है। पुट इट इन अ कैप्सूल फॉर्म। पुट इट इन अ कैप्सूल फॉर्म। अच्छा, बाहर की बात कम, अंदर की ज्यादा करो। जो बाहर गए हैं उनको भी मेरा निमंत्रण अंदर आने को है। यस, आज देश में कुछ शक्तियां ऐसा प्रयास कर रही है
कि देश की शांति, सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को ठेस लगे, और ऐसे प्रयास जगह जगह दिखने को मिल रहे हैं। और इसलिए जैसा आपने अभी कहा भारत की तरक्की को, तो जैसे कुछ लोग पसंद नहीं करते तो इस तरह का माहौल बनाते हैं। एक उदाहरण अभी हमने देखा है 2 दिन से, लेकिन बड़ा उदाहरण मैंने केरल का है, लेकिन महत्वपूर्ण है। एक पॉलिटिकल पार्टी की यूथ विंग एक प्रोसेशन निकालती है, और प्रोसेशन में क्या नारे देते हैं? यू वोंट चांट रामायणा, विल हैंग यू इन योर टेम्पल्स एंड विल बर्न यू अलाइव। अब इस तरह के नारे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे नारे लगाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्य सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने कहा कि जिसने नारे लगाए उसको हमने सस्पेंड किया है। मैं समझ नहीं रहा हूं, 300 कार्यकर्ता उसमें है, 300 कार्यकर्ता जला देंगे बोल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, जेल में डाला पार्टी द्वारा भी। और ये इतना भयंकर आज केरल का पूरा माहौल बिगाड़ने का और देश का माहौल बिगाड़ने के जो प्रयास हो रहे हैं, ऐसा ही एक प्रयास है। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी अनेक चीजों का स्वयं संज्ञान लेती है, तो इससे ज्यादा और गंभीर क्या होगा? 2 मजहबी फॉलोअर्स में वैमनस्य पैदा करना, यह देश के एकता को चैलेंज है, एकात्मता को चैलेंज है। इसमें निश्चित कार्रवाई हो, यही मेरी मांग है। श्री रामचंद्र जांगड़ा। मैं सदन का ध्यान एक गंभीर विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मानव राजस्थान से निकली हुई गाड़ियां लोहार एक जाति है। कहते हैं कि ये लोग महाराणा प्रताप की सेना में हथियार बनाने का काम करते थे, लेकिन महाराणा प्रताप के बलिदान के बाद इन्होंने इस कसम के साथ मातृभूमि छोड़ दी कि जब तक मेवाड़ पर स्वराज्य स्थापित नहीं होगा तब तक घरों को नहीं लौटेंगे। इतिहास मान्यवर कुछ भी हो, लेकिन ये सच्चाई है कि लोहे के औजार या उपकरण बनाने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये महीन से महीन लोहे का उपकरण भी बिना किसी आधुनिक मशीन और औजार के बनाने की दक्षता रखते हैं। मान्यवर, कुछ दशक पहले ये लोग किसी भी गांव या शहर के पास अपना काफिला रोक के वहां पर रोजाना काम में आने वाले उपकरणों को गलियों में फेरी लगाकर बेचते थे तथा बदले में अनाज और बैलों के लिए चारा लेते थे। अनाज का कुछ हिस्सा बेचकर ये दाल रोटी और कपड़ा लेकर उसका अपना गुजारा करते थे, लेकिन मशीनी युग ने इसके रोजगार को छीन लिया और आज ये स्वाभिमानी जाति भीख मांगने के लिए मजबूर है। मैं राष्ट्रीय राजधानी में ही इनकी तस्वीर दिखाई दे सकती है। जैसे ही हरियाणा से दिल्ली में आते हैं तो सड़क के किनारे गंदगी के बीच में अपना काम करते हैं, वहीं झोपड़ियों के अंदर रहते हैं। किसी भी आदमी का रोंगटा खड़ा करने के लिए कोई भी संवेदनशील आदमी इनकी बात को समझ सकता है। मान्यवर, मैं एक सुझाव है मेरा सरकार को, राज्यों में घुमंतु कल्याण बोर्ड तो हैं, लेकिन इनका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको नहीं दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वो राज्यों को निर्देशित करे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबसे पहले गाड़िया लोहारों को दिया जाए। इसके लिए सरकार स्वयं भूमि अधिग्रहण करे, यह मानवता का मामला है। इनको क्लस्टरों में बसाकर वहीं इनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आधुनिक कौशल और प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए। मान्यवर, ऐसे असुविधाजनक वातावरण में रहते हुए भी अगर इनके बच्चों को, युवक युवकों को देखेंगे तो इनकी सुंदरता और सुडौलता देखने को ही लायक है। इसलिए इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार कानून में प्रावधान करे कि जो भी सामान्य या पिछड़ा वर्ग का कोई भी युवक घुमंतु परिवार की लड़की से शादी